to arts and humanities, engineering, and perhaps medicine. So Yes, sir. multiple discipline, yeah, right. So I have been given a opportunity to talk on publications. Am I correct? Right. So I don't have any formal presentation because there's no kind of a I did not make any slides for presenting the about the publications. Publication covers basically the research quality as well as the journals which have been uh, used to publish the data, publish your work. So I'll just talk about the common thing and give you some idea about how to proceed for as a young researcher or a young faculty or as a young scientist to move to get your work place well placed in good journals. Uh, as far as the uh, publication are concerned, publications are the outcome, right? Publications are the outcome of the research that you are doing, irrespective of arts and humanities, irrespective of science and technologies, medicine, Unani medicine, Ayurveda, Ayush, whatever. आप जिस भी फील्ड में काम कर रहे हैं, जो रिसर्च आप कर रहे हैं, उसको you have to publish. So that is the basic idea. So what I would talk on. Okay, Asad bhai, Assalamu alaikum. Islam ji. Gee, Sorry, I'm so I'm sorry I sorry. started a little early. I mean, No. although I was in time. And no, you Right. you're absolutely on time. It was my No, it's okay. No problem. email. No, So thank you so much. I can see a lot of participants are also here, Asad bhai, to listen to you. okay. And I hope everybody is having a good day. Mhm. So I welcome you, Professor Asadullah Khan Saab, to yet another NEP orientation program under our MMTTP scheme. And, being a very dependable, regular resource person, it's always a delight to have you over, both as a scientist and as an academic leader with your background in the IQAC. So I hope in this new mission on NEP that we are all trying our best to renovate, reinvent, and realign this knowledge, this expertise that you will share with our participants here. Will be very useful. My dear participants, Professor Asad is an exceptionally bright young faculty member here at AMU, a scientist, very well recognized, having made enormous contributions to research, but see, so humble that he always finds time for us. Thank you so much, Asad bhai. I'm sorry you. for Nice, I'm okay. sorry for barging in, but Thank then I really had to extend this. No, it's okay. Thank you so much. Personal welcome. I'm already continuing. Please, So basically, carry. okay, I'll be talking on, given a chance to talk on publication. So it's a very vast subject, publication. Publication from monogram, articles, reviews, and books, chapters, and there are many more. So I'll just talk on the basic thing: what are the publications and where to publish and why to publish. That's the main objective. I don't have any slide to show you because I just share you the through my discussion. First, I'll talk why to publish. Number one. So this is the first question, that why do you want to publish? And since this program is under the NEP, aligned with the NEP, National Education Policy 2020, under which is more than it's a very huge documented by very experts in the area of education, and this documents basically says that publication, not exactly publication, but the research orientation, the technical skill development, right? So these are the major areas where the NEP is focusing on. So whatever technical education or technical skill development or knowledge gain process basically you are doing, it has to be disseminated, has to be displayed in one or other forms. So basically publications are the form where you show your knowledge and document that knowledge
authenticate that knowledge based on certain evidences. Doesn't matter whether it is of science and humanities, or arts, or technologies, or medicine, or Unani medicine, or Ayurveda. It doesn't matter. Whatever subject you are in, whatever knowledge you are having as a new knowledge, of course, that has to be published. So there's a millions and millions of books you see in all across the world. The libraries are in the libraries they are present. Even you have a lot of books in your own home library, your college library and institute library, and the books which are and the papers which are being published so far, there's a no, you can't count these papers and the journals. If you look the list of UGC care journal, which is a little controversial, so you can have different list 1, 2, 3, 4, and so on. Perhaps I'm not much aware about it, because I prefer beyond that, because to maintain the quality, UGC care journals are like a standard journals. I'll come to that later on, but just to continue my earlier discussion, why do you publish? Whatever you gain knowledge through some evidences, or through some kind of based on certain knowledge, then you have to make this knowledge authenticate. So that is the purpose of publication. Whether the publication is in the form of book, or in the form of a single chapter, or in the form of a one article or review article, right? Or research paper, or short communications, or letter to editor, whatever. It depends on the content of the article, or the published uh, published material, depends on your vast knowledge, which is based on certain evidences. Knowledge, I'm saying, because you already gained that information through certain parameters, certain evidences, certain experiments. If you talk about the science and technology, definitely in science and technology, you have to go through the experimental procedures to show some results and data, and that data is ready to publish. Then you have to write papers, right? Now, so the idea here is that, why do you publish? That's the question to answer. The publication is important because to make your document authentic and documented that information. For example, you are doing something, some researches and something in at your home, at your laboratory, home laboratory, or at your departmental laboratory or college laboratory, and you enter with certain very information, very important information, very important knowledge, right, being gained through this, but nobody will accept it. अगर आप उसको कहना शुरू कर देंगे, साहब देखिए मैंने जो है ये चीज डिस्कवर की है, या मैंने ये चीज बनाई है, या मैंने ये चीज ऑब्जर्व की है, तो nobody will accept until and unless that is to be documented. Now the question comes, where to document? Why publish? And where to document? So again, you can make that publication in a very low quality publishing press, local publishing press, or publishing press which never peer review your article or your research, and you publish it. That does not make any value, right? So why to publish and where to publish? Where you publish, because to make your research or your information, your observation documented, public documentation, so that everybody can learn, everybody can see and can observe that, and can get benefit out of that documentation. That's the purpose of the publication. C.V. Raman observed a scattering effect in the sky, right? And he published it. If he couldn't publish it, nobody knows what the scattering effect is, right? So it's a big discussion. He got a Nobel Prize. Ramachandran, they observed certain experimental model, mathematical models, and they give some predictions and structure of protein. If they couldn't publish the study, if he couldn't publish that study, then nobody knows what the Ramachandran plot is, right? If somebody's published, did some research on astronomy and says up this is this level of sky and new
satellites and stars and kind of a things in the sky, and moon and sun, their distance and the diameters and so on and so forth, the energy. If this could not be researched and documented, nobody knows it. So documentation is very important. For that, you need to have a publish. Now then come question the way to publish. As I told you, you can publish in a very local journals, local press with journals like, maybe the many nowadays, a lot of publications, even the publication in the local market, you find the places, a lot of shops, they're publishing books, and, people are getting even ISSN number. Now that publication, does that publication has any authenticity, any credibility? That's another question. So you have to publish, but where to publish, that you have to find. It depends on the nature of your research and the evidences which are being provided in order to support that research, right? So this is what the important way to publish. For example, I, as a microbiologist and biotechnologist, do some research, some AMR and drug resistance and drug designing, my own research. And I found something very, very novel. And then we start thinking where to publish. Then we identify some journals where to publish. So we have to identify 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10 journals. And these 10 journals are categorized on the basis of their credibility on the impact factors, right? Citation index, and the content that has been published in it, right? Now, I found that, okay, this journal is very good for my study. And I sent the paper to that journal, and journal rejected that paper. Again, why it is being rejected? Kyun reject ho gaya tha wo? So there are many reasons. I sent in another journal. It got published, and without peer review. Now, when you compare these two journals, the journal which rejected the study and the journal which accepted the study without any problem, without any peer review, there's a big difference. And what I found, I'm just talking you in terms of like making some case study. What I found is that the journal which rejected was a very high quality journal. And the reviews, peer review, and the reviewers which used to review these journals, papers, are very high caliber reviewers. The paper was rejected. But I sent another journal where my paper was accepted. The journal was very, very low quality journal. Even they could not, they never send it for the peer review. Even editorial team itself can review it and, okay, they can publish it. It might be paying some money for that. Or may not, doesn't matter, but the quality of the journal is not good. So now I have to decide based on certain criteria where we should submit the paper and where we should get the paper get accepted. But it does not mean that you compromise with the quality of the journal and quality of your work. If your work is not in a position that to publish in a high caliber, a high quality journal, then you don't publish it until and unless you refined that work to the level that the high quality journals can accept it. This is very important. Now, what is the high quality journal? This is another question. Right? High quality journals are the journals which has two very important features. Again, I'm talking about in very general mode, not specifically to a particular specific area. Of course, it varies from subject to subject. Some journals are very high quality with some high impact in certain subjects, but in other subjects, they're not high quality, they're not important. So we have to look into what are the important journals that we have for target. Right? What are the important journals where our study can be published? But again, I'm saying, don't look at the journals which are very low quality journals. Again, you can ask, what does a low quality journal means?
Okay, low quality journals means the journals, first criteria of low quality journal, the journal which are not at all send your study to the peer review process. What is peer review? Peer review होता है कि आपने पेपर भेजा and that paper was reviewed by your colleagues. I'm saying here colleagues because colleagues does not mean that your next neighbor. It does not mean that your faculty next to your chamber, next to your office. No, colleague means like your academic fraternity colleagues. Maybe somebody in BHU, somebody in JNU, somebody in Yale and MIT and Oxford. So the global community of your area. Suppose if you're working in economics, then the experts in economics all across the globe are your peer who review your paper in a way that to improve the quality. There are some issues. There are some issues where you have to have. There are some issues where sometimes there's a biasness in getting the paper accepted or not accepted. I know people sometimes what happen, you send the papers and reviewers is of your choice, and he's good friend of yours and he knows you very well. And then on the other hand, you also contacted him, okay, I'm sending a paper, please uh, look at it and give your comments. So now he ensured that that paper is coming to him, and if he accepted, yes, I received the paper through that journal in order to review. In that case, what happened? They will definitely accept your paper. They will either accept directly or they will send it back to you for revision. That's another not bad, but they will accept. So यहाँ जो biasness का factor है that affect the quality of journal, that also affect the quality of paper. So what is more important is that you should prefer the reviewers while being asked during the submission process, that the reviewers should not be should have any conflict, meaning should not close to you, should not from your own institution, should not from your own. Sometimes they might be negative. For example, आपकी किसी से लड़ाई है, somebody is not I mean rather jealous to you, or somebody does not like you or your science. So if somehow अगर पेपर उसके पास पहुंच जाएगा आपका, either through your or through other way, then he or she might reject it. But this is also wrong. Suppose if I am a person, I'm not your friend, but I know the person is doing some research, and the research is in this area, and if I received a paper of his or her to review, then I can have both the views. First view that ठीक है, हमें इसका पेपर एक्सेप्ट करना है because I know him. फिर हमने उसे फोन पे कह भी दिया, साहब हमने आपका पेपर आया, हमने एक्सेप्ट कर लिया. So these are all unethical issues, unethical things. दूसरा एस्पेक्ट ये हो सकता है, होता है मेनी टाइम, अच्छा इसका पेपर हमारे पास आ गया, ओके लेट्स सी, इसे रिजेक्ट करो. So both the approaches are not healthy. Both the approaches are unethical. If you received a paper from somebody's desk and they say she's known to me, then better not to accept the assignment to review. Ask editor, then I want to decline that because of the reason that there's a conflict of interest. So this is the good and healthy practice of publication to maintain the quality. Now, where the corruption lies, many people accept the assignment and either they reject or they accept for the reason of their friend or their enemy. So this is not good. And that affect the quality of publication. That also affect the quality of the journal. Over the time, the journal impacts might reduce, might decline. So what is the most important thing is that you should focus on the quality
irrespective of any kind of a journal. Just focus on the quality of your work, and try to publish to the best of the best places. Now, what I mean the best of the best places means, again, suppose for example we are in biochemistry or biotechnology, and हमारी फील्ड में जो सबसे अच्छे जर्नल्स हैं, मतलब टॉप टायर हाई टायर जर्नल्स माने जाते हैं, वो नेचर है, साइंस है, सेल है, एम्बो है. These are all. Somebody is having a comment on chat box like nowadays the predatory journals are some false or some fake journals. Yes, true. I'll come to that part also. So मैं क्या कर रहा था, भूल गया उस क्वेश्चन को देख के. Just forget it. Okay, so we should focus on our quality. What is our quality of journals, and try to. हाँ, मैं ये कह रहा था कि हमारी फील्ड में से नेचर, साइंस, सेल और एम्बो इनके जर्नल्स होते हैं, तो वेरी टॉप टायर जर्नल्स. तो अब मैं अपनी स्टडी एकदम नेचर में भेज दूं या सेल में भेज दूं, डज नॉट मेक सेंस. सो वी आल्सो हैव टू जज एंड असेस आवर ओन स्टडी that where it could be accepted. What is the best place where we can place this study? This is also very important. So if we can assess our study, so you are the best reviewer. You are the best reviewer. But when the reviewers might have some biases to your work. But I think you don't have biases because you want to publish it. If you have a positive biases, then you might lost. If you have a negative biases, then does not make sense. तो आप अपने काम को अच्छा समझेंगे, लेकिन आप ये मालूम है आपको कि ये काम मेरा नेचर में नहीं जा सकता है, तो आप उसमें नहीं भेजेंगे. The work can be published in the second tier of journals or some low quality journals. Low quality, I mean second tier of journals. Second tier are not high tier journals. So my question here is that when you have your study in your hand, experimental study or research study, then to targeting the journal is again very important. Now nowadays things are very very simple. आप एब्स्ट्रैक्ट लिए, बहुत सारी साइट्स भी हैं उसकी, उन साइट्स पे जा सकते हैं आप, जाके आप अपना पूरा एब्स्ट्रैक्ट पेस्ट कर दिए, क्लिक करिए, तो आपको पूरा जर्नल्स बता देगा व्हाट आर द बेस्ट जर्नल्स अवेलेबल फॉर दिस स्टडी. This is one of the options of AI based options available now. But even at your own level, you can see it. You can judge through keywords, right? Then you can also look into for example, you are sending a journal, say you can take an example of any arbitrary journal A, right? And in that journal you send, and the journal's quality is very very high, and the criteria and the scope of the journal is some defined. When you look at the journal scope, what you found that this journal may not have any place available to publish your data, right? Because your data is not in line with the scope of the journal. So this is how you can judge the possibility of publication of the journal. You should not be very overwhelmed. Should not be very overestimate the place of the journal, place of your research to be published in some high quality journals. So that could have like futile exercise to submit and then rejected, again submit and rejected. So targeting the specific journal relevant to your work is very very important, right? Now the question, how do you judge what are the possible journal where you have to target? So उसका तरीका सबसे आसान ये है, जैसे मैंने अभी बताया, कुछ सॉफ्टवेयर्स हैं, कुछ लिंक्स हैं, कुछ साइट्स हैं where you can open it and just paste the abstract there, and then this abstract will search through keywords and give you some possible journals. So these are AI based tools are available. Everybody knows AI will help a lot in that. Now second thing is that another basis of criteria of selecting journals, and if your study is not cooked enough, is not ready to be published in that journal which is the quality journals, then you have to hold the study. कोई जरूरी नहीं है कि आप नंबर अपना बढ़ाइए. So number of publication are not important.
sorry, number of publications are not important. The quality is important. आजकल क्या है साहब, यूजीसी ने और इन्होंने एक पॉलिसी बना दी है साहब एपीआई में, जिसके इतने पेपर होंगे, इतने पॉइंट्स होंगे, इतने पेपर होंगे, इतने पॉइंट्स होंगे, उसकी बेसिस पे स्कोर होगा, स्कोर की बेसिस पे आपका प्रमोशन होगा, ग्रेडिंग या जो भी है, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मुझसे आप पूछें, और मैं अगर यूजीसी में हूं, तो सबसे पहला काम मैं ये करूंगा कि एपीआई को खत्म कर दूंगा। आई विल स्क्रैप द एपीआई। द रीजन बिहाइंड दैट, but with the condition you should have some more rigorous criteria, and you should judge the teacher, judge the faculty member with their performance, right, and with their ability to teach, right, and the ability to do research. आप 4 पर्चे ले लीजिए, just take 4 or 5 papers and just put on the desk. 1 मिनट नहीं लगेगा आपको। मैं I have been associated with many selection committees, इंटरनेशनल सिलेक्शन कमिटीज में भी मैं रहता हूँ। बिलीव मी, आई टुक, मोटे मोटे फॉर्म्स आते हैं मेरे पास, मोटे मोटे फॉर्म रिव्यू के लिए आते हैं, यूजलेस। मुझे सिर्फ 5 मिनट लगते हैं। आई विल टेक ओनली 5 to 10 मिनट्स, नॉट मोर देन दैट, इन माई ओन सब्जेक्ट, कि साहब ये बंदा कहाँ स्टैंड करता है। ओनली 5 मिनट्स। आपको कुछ नहीं करना है, आपको पेपर उठाना है, उसके एक नजर सीवी पे मारना है, पेपर उठाना है उसके, और पेपर का कंटेंट देखना है, पेपर कहाँ छपा है, और पेपर के अंदर कंटेंट कहाँ भी नहीं छपा है ये भी मत देखो आप। आई डोंट सी विच जर्नल इट इज बीइंग पब्लिश्ड। इंडियन जर्नल है, फॉरेन जर्नल है, यूजीसी केयर है, नॉन केयर है, डज नॉट मैटर। आई डोंट इवन बिलीव इन यूजीसी केयर जर्नल। आई मीन आज ये है, कल वो है, आज इसे ऐड कर दो, कल उसे ऐड कर दो, एवरीबडी इज परेशान, टीचर परेशान है, आज ये लिस्ट फॉलो करेंगे, दूसरी लिस्ट फॉलो करेंगे, तीसरी लिस्ट फॉलो करें, ऑल दिस रबिश थिंग। आई मीन डज नॉट मेक एनी सेंस। मेरे हिसाब से जो बेस्ट थिंग है रिव्यू के लिए, आप 5 पेपर मांगिए किसी से, सिर्फ बेस्ट 5 पेपर्स, और उन 5 पेपर के बेसिस पे यू कैन रिव्यू एनीबडी। I have reviewed, and believe me, I have reviewed the credentials of the Sun Pharma awardees, which is one of the top award होता है, and I am reviewing committee of Sun Pharma award several times, and got a chance to review these applications, 30, 40 application from pharma, 40 application from basic sciences. And I took 80 to 90 applications to review, not more than 1 day, 1 or 2 days done. And जिन को मैंने नॉमिनेट किया, जिन को मैंने रिव्यू किया, 90% उन्हीं में से सिलेक्शन हुआ अवार्ड के लिए। So I didn't see their CV, I didn't see their whole lot of API score or anything kind of a parameter. I don't have a time to do that. अब इतनी मोटी 200 पेज की फाइल बना के आपने भेज दी रिव्यू के लिए मेरे पास, आई डोंट हैव अ टाइम, आई जस्ट टेक 5 मिनट टू रिव्यू द होल थिंग्स। सो दिस कुड बी द वे टू इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड टू जज रियल पर्सन। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, वेरी इंटरेस्टिंग। मैं अपनी पर्सनल एग्जांपल दे रहा हूँ। मेरा एक पेपर जब मैं प्रोफेसर के लिए मेरा बायोडेटा और मेरा एपीआई स्कोर मैंने बैठ के बनाया, तो मैं पागल हो गया बिल्कुल। I mean, I hate that kind of a thing. Calculation, ये paper, वो attachment. I mean, don't expect to a teacher this kind of exercise. Let the teacher be free. I have this philosophy. Let the teacher be free, enjoy their life, and they can have a good efficiency both in the research and teaching. If you bound a teacher to all clerical job, मुंशीगिरी करना, तो टाइम तो 24 ही घंटे हमारे पास, इतना नहीं टाइम हमारे। आप ये सब स्टार्ट करने के बाद आपने टाइम जो है हमें 26 घंटे दे दिए दिन में, या 30 घंटे दे दिए। व्हाट हैपेंड? यू विल नॉट, यू कांट फोकस ऑन योर वर्क।
I see in the colleges I used to go for NAC and NAB and NAC and NBA and kind of accreditation of various colleges. And what I found that teachers are busy so much in making all kind of documents and okay, I'm not going to that controversy. That's another thing. That's good part because of ranking and all kind. But I'm coming to the main publication point of view. From publication, just look at the publication. Where you publish, that's it. Making the decision on publication can only by experts. अब आप मुझसे आप economics को आप रिव्यू कर ली, मैं नहीं करूंगा. इकोनॉमिक्स में आपने एपीआई, अच्छा एपीआई स्कोर में क्या आपने नॉमिनी इकोनॉमिक्स का बना दिया, हिस्ट्री का बना दिया, 2 डिपार्टमेंट के आदमी, 2 वहाँ के, हिस्ट्री बन जाती है पूरी. वो भाई इसे रखना है, इसे नहीं रखना है, अच्छा ठीक है इसे हटाओ, इसे हटाओ, फिर केस होते हैं बाद में कोर्ट के. अरे साहब देखिए हमारा तो सीवी ये था, क्यों तो देखा ही नहीं है. ही हैज नो एबिलिटी टू चेक दैट एपीआई स्कोर. इवन टाइम ही नहीं है उसके पास. 1 घंटे में आप क्या 50-100 फॉर्म देख लेंगे. 150 एप्लीकेशन आई लेक्चरशिप के लिए एंड यू आर नॉट एबल टू check even a 10 application sensibly. How do you check it? So all these things are not practical, but they have their own importance, right? Because otherwise you need very high caliber expert, those who just look at it. For example, आपके 10 लोग बैठे हुए हैं यहाँ, फिजिक्स के हैं या बायोकेमिस्ट्री के हैं, आप उनके सारा सीवी 2 पेज का, सिर्फ 2 पेज का सीवी और 5 पब्लिकेशन मुझे दे दीजिए. आप सिर्फ 5 पब्लिकेशन और 2 पेज का सीवी आप मुझे दे दीजिए. मैं आपको 1 घंटा तो बहुत होता है, आधे घंटे में ये बता दूंगा कि हु इज नंबर 1, हु इज नंबर 2, हु इज नंबर 3, हु इज नंबर 4. So this kind of a talent is required now in our country to boost the knowledge and to improve the knowledge and to gain the knowledge. Otherwise, it is all like many times you recruit a person with a high API and he's not capable of doing anything. So everybody is running for API improvement, not their knowledge improvement. Right? It is just like a college, just like a coaching business. I also don't believe in coaching. कोचिंग में क्या होता है, आपको ट्रिक सिखा के वो आगे बढ़ाते हैं. आपको सब्जेक्ट आप भूल जाएंगे सब. रियल क्रक्स ऑफ द मैटर क्या है, इसके अंदर डीप नॉलेज क्या है, यू आर नॉट अवेयर अबाउट इट. बट व्हाट यू नो, ओके वी गॉट 10 मिनट में मैंने 15 क्वेश्चन कर लिए, वाह क्या बात है. सब्जेक्ट ही नहीं पता क्वेश्चन थे किस पे ये. सो एपीआई जस्ट लाइक दैट. आई एम नॉट गोइंग अगेंस्ट टू गवर्नमेंट और अगेंस्ट टू यूजीसी नॉर्म्स बिकॉज दे आर ऑल्सो बाउंड टू डू दैट. लेकिन मैं अपने व्यूज बता रहा हूँ एंड आई हैव ऑलरेडी, मैं ये बता नहीं रहा हूँ, आई हैव डॉक्यूमेंटेड माई व्यूज in India's one of the top journal current science from IS इंसा से IIC बेंगलोर से निकलता है. वो करंट साइंस में मैंने पब्लिक, जिस दिन ये यूजीसी की पॉलिसी निकली थी, आई थी, इम्प्लीमेंट होने जा रही थी, तो मैंने तभी एक आर्टिकल लिखा था. एंड दैट आर्टिकल वाज, although it was quite harsh article to the UGC, but I think the current science editor liked it and they cut down certain of my harsh words there and they publish it. It is documented. I decline and denounce the use of API system. But of course, I cannot intervene into the policy because I'm not of that level person that to confront with the policymakers, and I'm not in a committee of the policymakers peoples. I can just have a right to share my views. But believe me, API is a very rubbish thing. API is deteriorating the research quality of our country. मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देता हूँ. During my professorship, I put a paper which has an impact of 22. How much? 22 impact. High quality journal, genes and development, which about that. And that paper was got only 3 or 4 marks. Perhaps 3 or 4 marks मिले मुझे. क्यों? Because there's a 11 or 12 authors in that papers. देखिए अच्छा काम होगा, ऑथर्स ज्यादा होंगे. एक आदमी सारा काम नहीं कर सकता. एक साल में आप एक पेपर छापेंगे बड़ा, उसमें 10 ऑथर होंगे. आप एक साल में 10 पेपर छापेंगे कम ऑथर के, क्वालिटी डाउन होगी. या तो बड़ी टीम हो आपकी, जैसे 10-15 लोग आपके साथ रिसर्च में काम कर रहे हैं, देन इट मेक्स सेंस. अदरवाइज यू डोंट हैव एनी स्टूडेंट्स, यू आर पब्लिशिंग. सो
दूसरा मेरा पेपर जो था, जो 2 पेज का एडिटोरियल था, सिर्फ 2 पेज का, आई एम द सिंगल ऑथर, 2 पेज का एडिटोरियल था, अच्छे जर्नल में था, दैट जर्नल ऑफ दैट इम्पैक्ट इज 4 + 4.5. बिलीव मी, वी गॉट 35 or 30 मार्क्स, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली. मैं सरप्राइज रह गया, आई वाज टोटली शॉक्ड. आई सेड व्हाट दिस नॉनसेंस, इस तरह के तो मैं हर महीने में 10 पेपर छाप दूंगा, एंड हमारा तो एपीआई स्कोर फिर 1000 पहुंच जाएगा. आई एम नाउ एलिजिबल फ्रॉम सुपर प्रोफेसर. Are you getting this point? And the paper which I put 2 years to work hard day and night, and lot of collaboration in that, very high quality papers, high information, very novel discovery, and very top journal we published it, and we got only 3 marks. अब बताइए आप मुझे कि कौन रिसर्च करेगा हमारी कंट्री में? लोग एपीआई स्कोर बनाएंगे. अच्छा, प्रोफेसर हो गए एपीआई कर करके अपना, तो प्रोफेसर के बाद तो फिर पढ़ना ही नहीं, फिर तो रिसर्च ही नहीं कराना है, फिर तो अपना खाली टाइम पास करना है, फिर तो नाउ आई एम प्रोफेसर. अब तो हम खाली डेकोरेटिव पीस हो गए. तो दिस इज अ, आई थिंक आई एम sorry, I'm deviating from my main topic, but this is also very important. So come to the publication. So publication जो है वो basically आपको high quality publication पे जाना है, पब्लिकेशन के इम्पैक्ट पे नहीं जाना है. देखिए, अगर मैं इस बात को बार बार कहता हूँ, इम्पैक्ट फैक्टर के पीछे लोग भागते हैं. आर्ट्स वाले बेचारे जरा कम भागते हैं, क्योंकि आर्ट्स में बहुत ज्यादा स्कोप इम्पैक्ट का शायद नहीं है वैसे, लेकिन आर्ट्स वाले समझते हैं शायद इम्पैक्ट में हम ज्यादा नहीं छाप सकते, तो हम कम से कम यूजीसी केयर में छाप दें, आईसीएसएन नंबर में छाप दें, इंडेक्स में छाप दें. लेकिन साइंस वाले थोड़ा ऊपर समझते हैं, कहते हैं नहीं साहब, हमें तो इस इम्पैक्ट में छापना है, 4 में छापना है, 5 में छापना है. दीज आर ऑल लाइक गेम. इम्पैक्ट फैक्टर इज ओनली अ गेम. Impact factor is just like a game of a private, just like a private institutions. जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस को अट्रैक्ट करने के लिए वो कॉस्मेटिक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को अट्रैक्ट करने के लिए, इसी तरह जर्नल्स जो हैं बहुत सारे, वो इम्पैक्ट फैक्टर का इस्तेमाल करते हैं ऑथर्स को कैच करने के लिए. राइट, दिस इज फैक्ट. देखिए, मैं कोई किसी हवा में ये बात नहीं कर रहा हूँ. आई एम नॉट सेइंग, बिकॉज I have at least more than 250 to 660 269 papers published है मेरे आज की डेट में. एंड एवरेज इम्पैक्ट भी पेपर का मेरा 5 के करीब है ऑल अक्रॉस, और अदरवाइज 9+ इम्पैक्ट है बहुत बेस्ट पेपर्स का. तो मैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, मैं मतलब बहुत एक्सपीरियंस की बात कर रहा हूँ. लेकिन व्हाट आई प्रिफर, देखिए कहीं ना कहीं तो आप छापेंगे, कुछ ना कुछ तो इम्पैक्ट होगा उसको. और ये भी बात सही है कि जो हाई क्वालिटी जर्नल है उसको इम्पैक्ट ज्यादा होता है. अब इम्पैक्ट ज्यादा क्यों होता है ये भी आप समझने की कोशिश करिए. इम्पैक्ट ज्यादा इसलिए होता है कि वो पेपर जितनी दफे साइट होगा, वो जनरल के में जो पेपर छपा है वो जितनी दफे साइट होगा, उस जनरल का साइटेशन इंडेक्स बढ़ेगा. और इम्पैक्ट फैक्टर जो है वो साइटेशन इंडेक्स पे डिपेंड होता है. राइट, एंड इसीलिए आप देखिए किसी भी जर्नल का इम्पैक्ट फैक्टर कांस्टेंट नहीं रहता है. आज इम्पैक्ट फैक्टर इतना है, कल को चेंज हो जाए, चाहे वो डेसिमल में चेंज हो. इट डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ साइटेशन एंड नंबर ऑफ पेपर्स कम्स, बट इट विल चेंज. फ्लक्चुएशन होगा उसमें, प्लस माइनस प्लस, मतलब ग्राफ यूं आएगा आपका. ये नहीं कि आपका यूं चढ़ता चला जा रहा है, चढ़ भी सकता है मतलब, बट वो भी चढ़ेगा भी तो यूं करके चढ़ेगा, फ्लक्चुएशन के साथ चढ़ेगा. तो इम्पैक्ट फैक्टर इज फ्लक्चुएटिंग फैक्टर बिकॉज इट साइटेशन कीप चेंजिंग. कभी कम हो जाएंगे, कभी ज्यादा जाएंगे. कुछ जर्नल्स हैं जो मेंटेन रखते हैं अपने आप को, जो बहुत हाई रैंक टॉप जर्नल्स हैं, तो उनकी कुछ टैक्टिक्स हैं. देखिए, बहुत से जर्नल्स, इसीलिए साइंस में मैं बता रहा हूँ, मेरा खुद एक्सपीरियंस है कि जब आप पेपर भेजेंगे तो वो आपको कमेंट लिख के भेजेंगे, साहब आप इसमें इस जर्नल का रेफरेंस डालिए. क्यों? क्योंकि वो जर्नल का रेफरेंस डालने से, ये भी मैं टेक्निक बता रहा हूँ आपको, अगर आपको किसी जर्नल में पेपर छपाना है तो उस जर्नल के आप 10 पेपर जो उस जर्नल में छपे हैं, उसके रेफरेंस डाल दीजिए आप उसके अंदर. यू हैव अ बेटर चांस ऑफ पब्लिकेशन. क्योंकि जनरल क्या कर रही है, तो हमारी जनरल आगे हमारा साइटेशन बढ़ जाएगा, इस पेपर को ले लो फौरन, क्या रिवाइज करा है, कुछ करा है, लेकिन ले लेगा वो. मतलब कुड बी, आई एम नॉट सेइंग, गारंटी नहीं ले रहा मैं इस बात. ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द क्वालिटी ऑफ द वर्क. अदरवाइज कुछ साइट ही नहीं करेगा, फिर और डाउन हो जाएगा. तो द ओनली थिंग इज दैट
पब्लिकेशन आप करना है तो आप उन पब्लिकेशन को बेस्ट प्लेस पे करिए, और व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इन पब्लिकेशन, योर कंटेंट. पेपर इज नॉट इंपॉर्टेंट, टाइटल इज नॉट इंपॉर्टेंट, कंटेंट जो उसमें है वो इंपॉर्टेंट है. जो भी एक्सपर्ट होगा, जो यूजर होगा, जो देखेगा उसको, वो कंटेंट देखेगा, इसमें है क्या, कौन सा एक्सपेरिमेंट किए हैं, कितने किए हैं, लाइन ऑफ एक्सपेरिमेंट्स क्या है, उसका ऑथेंटिसिटी क्या है, वैलिडेशन क्या है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या है, कंक्लूजन क्या है. दिस इज व्हाट एवरीबॉडी विल सी, राइट. बट if you publish just for the sake of API here and there, then you may increase the number of publication, right? But these number of publication would not pay you recognition. ठीक है, देखिए प्रोफेसर, देखिए मैं प्रोफेसर होना कोई बहुत बड़ा रिकग्निशन नहीं है. आई डोंट थिंक आज की डेट में प्रोफेसर होना बहुत बड़ा रिकग्निशन. आई डोंट कंसीडर माई सेल्फ एज आई एम ए प्रोफेसर, सो आई एम वेरी वेरी बिग पोजिशन. आई डोंट कंसीडर प्रोफेसर एज ए बिग पोजिशन. 2012 में मैं प्रोफेसर हुआ, ऑलमोस्ट 10 years ago, मोर देन 10 years ago. तो जब मैं प्रोफेसर हुआ, मेरा लेटर आया, तो मेरी वाइफ बोली तुम यू नॉट हैप्पी. तो मैंने कहा हाँ, मतलब ठीक है, हो गया प्रोफेसर. तो बोली क्यों, वाई यू नॉट हैप्पी, प्रोफेसर तो यार लोग ड्रीम होती है प्रोफेसर होने की. तो मैंने कहा तो ऐसा है ना प्रोफेसर, आई डोंट वांट टू यूज दैट वर्ड, थोड़ा सा मैंने कहा देखो ऐसा है ना, अच्छा प्रोफेसर, बड़ा प्रोफेसर सब बराबर लाइन में खड़ा हुआ है. जिसने काम किया वो भी प्रोफेसर है, जिसने काम नहीं किया वो भी प्रोफेसर है. जिसने 25 PhD करा दी वो भी प्रोफेसर है, और जिसने पूरे जिंदगी में 5 PhD नहीं कराई वो भी प्रोफेसर है. जिसने 250 पेपर छाप दी वो भी प्रोफेसर है, जिसने 4 पेपर छापे वो भी प्रोफेसर है. हाउ डू जज द प्रोफेसर? व्हाट इज द स्टैंडर्ड, व्हाट इज द बेंचमार्क ऑफ प्रोफेसर? So, being a professor is not good. What is more important is what is your knowledge. I know very many people who are not even yet professor. They are associate professor for some reason, for maybe उन्होंने PhD नहीं की या उन्होंने some other reason, arts and humanities में जानता हूँ, but they are really and really they are, you just, अब देखो ऐसा ना, जो आदमी knowledgeable होगा उससे बात करके आपको 10 मिनट में पता चल जाएगा इसका लेवल क्या है. टैग लगाने से कुछ नहीं होगा. आपका माथे पे यहाँ प्रोफेसर लिखा हुआ है, डज नॉट में. बड़े बड़े प्रोफेसर में देखे वो बोल नहीं पा रहे थे, प्रेजेंटेशन सही नहीं है, क्लास में लड़के परेशान है, टीच डज नॉट मेक सेंस. तो ये सारा जो सिस्टम है ये मतलब आई डोंट नो व्हाट टू से, बट द सिस्टम, द होल सिस्टम, व्हाट वी अडॉप्टेड इट और व्हाट वी एक्सेप्ट इट इज नॉट फेयर टू मी. हम एक प्रोफेसर की बड़ी ऑनर, अरे साहब प्रोफेसर साहब हैं, लेकिन एक बेचारा लेक्चरर है बट वेरी टैलेंटेड एंड वेरी हाई कैलिबर पर्सन. ठीक है, अभी उसकी एज है, कल को वो भी प्रोफेसर होगा, उसको हम घास नहीं डालेंगे, उसको हम किसी कमेटी में नहीं बुलाएंगे, उसको हम कोई थीसिस इवेल्युएट करने के लिए देंगे. प्रोफेसर को दे देंगे, चाहे प्रोफेसर बिल्कुल गड्ढा हो हमारी तरह, रोज थीसिस आ रही चाहिए. तो द थिंग इज दैट वी हैव टू चेंज द माइंड सेट. दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. देखिए मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ बिकॉज FDP प्रोग्राम और इस तरह के जो प्रोग्राम है उसमें हमारे जो सारे पार्टिसिपेंट्स हैं दे ऑल आर टीचर्स एंड दे आर वेरी honorable teachers and they all are across the country, so the message should go to each and every place. I want to give this message to every teacher and every academic fraternity member that what we have to do, we should not totally dependent on what the criteria has been sent for us. We also have some brain. हमारे पास भी थोड़ी सी अकल है. हम सोचें what is important, और अगर हम हर चीज को एक्सेप्ट करते चले जाएंगे सिस्टम में तो हमारा पूरा समाज, पूरा सिस्टम वैसी बन जाएगा. एंड वी आर बाउंड टू दैट एंड दैट्स व्हाट वी आर इन नाउ. तो इसलिए वी हैव टू चेंज दैट, वी हैव टू somehow we have to change this stigma, we have to change this mindset that what does exactly academic means, what does academic progression means. 50 पेपर छाप लिए, 100 पेपर छाप ली does not, it's not an academic progression. We should not give weightage to that, and that's what the API is implemented on us, and so we are bound to that, to make that level of papers, to make that points, and then we have to go. So my request to all of you is that as far as the publication is concerned, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में मैं ये बात बहुत दिल से कह रहा हूँ ये बात, क्योंकि I want youngsters and young people and new researchers or those who are in research should come in the real science.
आपकी साइंस बोलेगी, आपकी रिसर्च बोलेगी, आपके पब्लिकेशन नहीं बोलेंगे। एंड यू आर नोन इन योर होल वर्ल्ड। उसके लिए आपको क्या करना है? 2 चीजें करना है। एक तो ऑनेस्टली विद डेडिकेशन कंसिस्टेंटली काम करना है। डज नॉट मैटर कि आपको 1 साल लगे या 2 साल लगे या 3 साल लगे, जब तक आपका वो पूरी स्टोरी पूरी ना हो जाए, डोंट पब्लिश दैट स्टोरी। सो नंबर 1, पब्लिकेशन ऑफ अ कंप्लीट स्टोरी। स्टोरी मैं इसलिए कर रहा हूं कि आपने एक बात हाइपोथेसिस प्रोड्यूस करी, एक रेशनल की बेसिस पे आपने एक थॉट प्रोसेस किया, एक हाइपोथेसिस दी, विच नीड टू बी वैलिडेटेड थ्रू एक्सपेरिमेंटल साइंस में एक्सपेरिमेंट्स करना होंगे, 1 किया, 2 किया, 3 किया, 4 किया, वैलिडेट किया, कंक्लूड किया, एंड यू रीच टू द हाइपोथेसिस प्रूव्ड। आर्ट्स ह्यूमैनिटीज सोशल साइंस के केस में और लिटरेचर बेस्ड क्राइटेरिया होता है, बहुत सारी चीजें होती हैं, एंड दोज हु आर इन द फील्ड दे नो बेटर, सो दे गो विद दैट। सो एट द एंड ऑफ द डे व्हाट यू रीच टू द कंक्लूजन, अगर वो आपकी हाइपोथेसिस जो आपने प्रपोज की है विद सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स, अगर वो पूरी नहीं हुई है, तो दैट इज इनकम्प्लीट स्टोरी, वी कॉल्ड हाफ बेक्ड स्टोरी। आपने केक बनाया ना ओवन में, और केक आपने आधा कच्चा रह गया, आधा मान लीजिए सब ऊपर से वो पक गया या नीचे से पक गया, पता नहीं कहाँ से पकता है वो, और आधा वो हो गया, तो दैट इज हाफ बेक केक आपका। तो वो तो कोई नहीं खाएगा, वो या हो सकता है आधा खा ले उसका कोई, बट ये इट्स यूजलेस। इसलिए हाफ बेक जो स्टोरी है आपकी, वो किसी काम की नहीं है। इट इज नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन टू द सोसाइटी, इट इज नॉट गिविंग एनी इन्फॉर्मेशन टू द एकेडमिक फ्रेटर्निटी, it is not going to any information to use it as a basic science to implement into the applied science, translate into the market and into the community, to the society. So what is important? Number is not important. What is more important is the quality and the complete story. So when you have done complete story and then you realize that, देखिए आप अपनी फील्ड में आप ही एक्सपर्ट है, मैं नहीं हूँ। आपकी फील्ड में मैं एक्सपर्ट नहीं हो सकता, मेरी फील्ड में आप एक्सपर्ट नहीं हो सकते। हर आदमी, हर टीचर, हर फैकल्टी अपनी फील्ड का एक्सपर्ट होता है। ही नोज, ही या शी नोज दैट ये जो मैंने प्रपोज किया है ये पूरी हो गई है स्टोरी। हमें क्या होता है, हमें मालूम तो होता है ये पूरी नहीं हुई है, लेकिन होता क्या है, भाई लड़के की पीएचडी सबमिट होना है, पेपर जाना है। अरे साहब जब तक ये पेपर नहीं होगा पीएचडी नहीं होगी, एक पेपर नहीं होगा तो ये नहीं होगी, आरएससी नहीं होगी। सो दिस आर ऑल काइंड ऑफ अ थिंग दैट वी हैव पुट ऑन आवर burden on us and make us kind of affecting our quality, and we are not able. I know that the person in when I was in a postdoc in USA, there was a lady, she was a Kinza something करके थी, उसका नाम मुझे पूरा याद नहीं है, सरनेम। She was a lady which run the whole lab uh, with a single technician, and she used to work herself. साल में 1 पेपर छापती थी वो, and she's also teaching in the university, Rutgers. And believe me, the paper is of high, कोई उस यूनिवर्सिटी में उस लेवल का पेपर नहीं छाप पाता था, साल में 1 पेपर छापती थी वो। And that paper either in cell or science or nature. I think those who are from biology and biochemistry background, they know the value of science cell in nature. So कहने का मतलब ये कि कंसिस्टेंट होना, कंप्लीट करना, उसके लिए आपको साल में 2 छापना है, 3 छापना है, हमें रिपोर्ट सबमिट करना है। यहाँ क्या है, यहाँ आपको रिपोर्ट सबमिट करना है, आपके 10 पेपर हो गए, आपके 5 पेपर हो गए, आपके 20 पेपर हो गए। सो वी आर नॉट, नोट इट डाउन, वी आर नॉट अ प्रिंटिंग प्रेस। डोंट एक्सपेक्ट अस वी आर अ प्रिंटिंग प्रेस। अगर आपको प्रिंटिंग प्रेस लेना है तो आप मार्केट में जाके छपवा लिए पेपर। सो वी आर नॉट अ प्रिंटिंग प्रेस, वी आर एकेडमिशियन, we are a teacher, we are a researcher, we are a scientist, social scientist, humanities scientist, and we have to look into the authenticity of the work, validation of the work. जो बात हमने कही है उसका validate है नहीं, then only we make it documented, we publish it. Otherwise, I mean, this is kind of useless thing, and ये आप छापे जाइए आप, ठीक है आप प्रोफेसर हो सकता है हो जाएंगे, लेकिन उस प्रोफेसर से कोई फायदा नहीं है। जो प्रोफेसर नॉलेज प्रोफेस न कर पाए, जो प्रोफेसर होने के बाद अपनी नॉलेज को डिसिमिनेट ना कर पाए, और जो प्रोफेसर अपनी नॉलेज को कम्युनिकेट करके आगे प्रोपेगेट ना कर पाए, मैं उस प्रोफेसर को प्रोफेसर नहीं मानता। प्रोफेसर मीन्स or the teacher means you have to strong enough to learn and to disseminate.
learn and teach, right? So teaching and learning. So अगर आप teaching learning communication नहीं है तो फिर और high quality का, then probably uh, you know, you does not have any right to be in teaching fraternity. You can quit it. You can be a good administrator. You can be a good officer. You can be an IS officer. You can be a, you know, pilot. You can be anything, but you are not supposed to be a good teacher. So उसके लिए whatever you publish complete story, right? अच्छा, एक बात मैं यहाँ कहूँगा क्योंकि मेरा शायद लेक्चर थोड़ा सा डेविएट हो रहा है, बट डज नॉट मैटर. Q1 एंड Q2 मैं अभी थोड़ी देर में आपको 20 मिनट क्वेश्चन पूछने के लिए दूंगा, क्योंकि आई कैन नॉट स्टे लॉन्ग बिकॉज मैं सुबह से आज घर नहीं गया हूँ. आई एम नॉट एबल टू इवन टेक इवन सिंगल फूड बिकॉज आई हैव अनदर प्रोग्राम almost half an hour before at 4. I finished it in program. I was there. So there's a journal called Q1 and Q2 journal, quartile 1 and quartile 2 journal. Now these quartile 1 and quartile 2 journals are basically the standard now. Impact factor, citation, apart with that, now the quartile 1 and quartile 2 concept आ रहा है. अच्छा, ये भी फिर मैं कहूँगा, देखिए quartile 1 quartile 2 भी उसके बाद है जो बात मैंने कही है, बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ ए मेजरिंग मैट्रिक्स. इंडेक्स एक है ये, क्योंकि हमें कोई ना कोई इंडेक्स बनाना पड़ेगी किसी चीज को मेजर करने के लिए, है ना. आप यहाँ से लखनऊ जा रहे हैं तो आपको मालूम है कि अब हम 10 किलोमीटर आ गए या 20 किलोमीटर आ गए या 25 किलोमीटर आ गए या 400 किलोमीटर आ गए या 450 पे हम पहुंच गए वहाँ लखनऊ. There should be some landmark. Similarly, we should have to decide some. So quartile 1 and quartile 2 are very standard method, better than impact factor. There are many journals which are not in quartile 1, but they are relatively higher impact journal. क्योंकि देखिए impact factor की मैं आपको कहानी बताऊं. Impact factor मैंने पहले कहा था कि it is kind of what I say, citation game. So what they do, they try to improve the citation of the papers published in that journal. Say journal X journal कोई है, X journal में 10 पेपर उन्होंने एक इशू में छापे. अब इन 10 इशू के साइटेशन इंप्रूव करने की वो स्ट्रेटजी बनाते हैं. कैसे बनाते हैं? उसको फ्री कर देंगे, उसको भेजेंगे, फील्ड के लोगों को भेजेंगे, तो पेपर साइट होगा. जब साइट होगा तो इम्पैक्ट बढ़ेगा. सो देयर मेनी गेम्स फॉर, यू नो, एडिटर कैन आस्क यू कि साहब आप इस जर्नल के पेपर साइट करिए इसमें ऑफिशियली. सॉरी, फोन. तो वो सारी चीज, तो इसलिए इम्पैक्ट फैक्टर इज नो मोर बी ए वेरी इम्पैक्टफुल पैरामीटर और मैट्रिक्स टू जज द क्वालिटी ऑफ योर वर्क. What is more important is Q1, Q2, at least to some extent. Of course, the topmost thing is that the content of your work. Like I still remember I met a very big scientist. He used to be my mentor also. He used to say me that, Asad, don't consider the impact factor. मुझे वो बात उन्हीं से learn की मैंने. And you just consider that look the content of the work and their impact on the society and their impact on the field, right? Impact in the field. So I think it is always very good that जी शमी साहब. Yes, sorry. So yeah, what I was talking about
Q1, Q2. So at least to some extent you can focus on that Q1, Q2 journal, quartile 1, quartile 2, 3 and 4. They are the 4 categories. तो जो quartile 1 journal है वो उसमें इन्होंने citation index और impact factor दोनों को के बेसिस पे क्वालिटी को इन्होंने मेंटेन किया है. And also the content being cited many times. Right. So you should not go into nitty-gritties of the Q1, Q2, but what is more important is to look into to look at the content that we are publishing. Again, I'm saying please focus on. देखिए आप जो भी काम करेंगे क्वालिटी का वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा, राइट? वो ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं प्लेस हो जाएगा. ऐसा नहीं है कि वो लोग रिकग्नाइज करेंगे उसको. नोबडी विल सी कि आपने जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, आई हैव बीन रिकॉग्नाइज्ड इन द फील्ड एज ए antimicrobial resistance. Please don't mind taking my own example. Aligarh superbug, I discovered NDM4 2014. So वो कोई बहुत बड़े जर्नल में पेपर नहीं छपा था. I rush it and quickly submit in very core. अच्छा एक चीज होता है, कोर जर्नल में छापिए आप पेपर. कोर मीन्स लाइक आपकी जो फील्ड है, आप अगर काम कर रहे हो कॉमर्स में, अकाउंट्स में, तो अकाउंट्स के जर्नल में पेपर छपना चाहिए. दैट मेक सेंस, दैट मेक वैल्यू. चाहे एक इम्पैक्ट हो या 2 इम्पैक्ट हो. आपने 10 इम्पैक्ट में छाप दिया बट दैट इज ऑफ लाइक किसी दूसरी फील्ड का है, टूरिज्म में छाप दिया आपने. व्हाट डज इट मीन? छप ठीक है, चलिए छप गया आपका पेपर, समाओ इम्पैक्ट भी ज्यादा है. आप कहाँ दिखाएंगे उस पेपर को? कौन पढ़ेगा उस पेपर को? आपकी कम्युनिटी में लोग आपको कैसे जानेंगे? आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? सो द थिंग इज दैट यू शुड बी वेरी so one of the most important thing is that you should focus on the quality and you should focus on the content that you produce and the authenticity, and then you publish in the page. So there's no criteria where to publish. It is you to decide where to publish, right? It is you to decide the way to publish. Until unless you decide yourself, nobody can decide it, right? So I think this is all about. उसके अलावा कोई अगर आपको क्वेश्चन पूछना है तो please go ahead. I think I'm exhausted now. Yes, any question, please? Sir, Yes. Assalamu alaikum, sir. Vaishnav. Sir, I have a query regarding the publication. So, if sir has told about the APA score and all, no? So in that it has been written if this review articles or the editorial also will be considered. Sorry? The review articles or the editorials also will be considered. Yes. Review articles basically is considered, but generally invited reviews are more preferred than the communicated reviews. Oh. So if you've been invited certain review, that makes sense. वैसे आपसे अगर कभी कोई, if somebody asks you के submit a best 5 paper or 6 paper, so my suggestion is that never try to give the review articles, because review article is your own thoughts on your own philosophy. Experimental paper is those who are in experimental science, obviously I'm talking that they are based on the outcome of the experiment that they perform, so they have more authenticity. So they always consider better way, like for some awards or for some citations or for some kind of fellowship or any kind of a recognition you want to submit something. कहते हैं कि आप 5 पे बेस्ट पेपर भेजिए या 10 पेपर भेजिए, तो उसमें always review को अवॉइड करना चाहिए. रिव्यू को मत दिए. अदरवाइज रिव्यूज आर कंसीडर्ड एज पब्लिकेशन. रिव्यू आर्टिकल्स हैं, एडिटोरियल्स हैं, लेटर टू एडिटर्स हैं, कमेंट्रीज हैं, मोनोग्राम है, बुक है, बुक, दे ऑल आर पब्लिकेशन, दे ऑल अंडर डिफरेंट कैटेगरीज एंड दे हैव अ वेटेज. Okay, thank you, sir. Yes, any other question? Hello. Yes. Sir, namaste, sir.
नमस्ते। Sir, if a paper by mistake यार is published, हाँ अफजल, हेलो। yes, sir. हाँ जी, सॉरी। Yes. Any Yes, question? sir. If a paper is published in cloned journal by mistake, In which journal? cloned journal, clone. Uh-huh. Uh, can I publish the same paper, republish the same paper in another journal? No. Once it has become public document and it is a right of the publication. Hello. It is a right of the publisher. Once you publish, it has become a document of the publisher. So it's a public document. So you cannot reproduce in another journal. It is called self-plagiarism. Yes. It means I should ask the publisher. No, you should not even publish. Why you are publishing again? Yes, sir. Actually, sir, as I have published a paper by mistake, it gone to a clone journal, and I do not show the paper to anybody. Okay. So, Yeah, but the journal has make it public, na? Once it is published, either you, उसका तरीका ये है, you retract that. You ask them to withdraw the paper. yes. You ask them to withdraw the paper, to retract the paper at the journal's level on, not publicly, and then you can, after withdrawing the papers, getting letter, then you can publish anywhere you want. Yes, sir. Yes, thank you. Okay, friends. If not anything, then let me close. Yes, Sir. sir.